Okay, so good morning, everybody, once again, Good morning. and welcome to this Excel for HR workshop. Right. So, we as an HR professionals, right, uh, Excel is one of the tools that we come across daily, correct? And Yes. many a times there are many functions that we can perform using Excel. But the thing is that there are many functionalities of Excel that we use on day-to-day basis, and I think HR professionals should have a good command over Excel so that they can do their job quite easily. Now, the biggest question is that what is our mastery over Excel, or how many functions we know, right? And I thought that this kind of program will definitely help HR professionals because the kind of reports that we are generating, the kind of MIS that we are generating, and predominantly the use of HR analytics, right? The demand for HR analytics has increased over a period of time. How many of you are aware of HR analytics? Are you aware about HR analytics? No, sir. Okay. Anyone else who is acquainted with HR analytics? No, sir. Okay. So HR analytics is basically a field of HR, or you can say it's a part of HR, wherein see currently what you guys are doing is currently we are only looking into MIS report, right? For example, we are trying to find out the absenteeism rate, or we would be finding out the attrition rates. We would be finding out what is the cost of recruitment that we are doing, or what is the turnaround time for closing our positions, right? So these are the few of the things that we normally monitor. Now, once we monitor it, what we do after that, right? That is more important, right? So basically, analytics help us to do data-driven decisions, and Excel is one of the functions which can help you to get those reports, get those dashboards, and get those functions in place so that your job becomes quite easy, right? And that is the one of the reasons that we have organized this workshop, right? Now, I would like to hand over the stage to Hardik, who would be taking us through various functions of Excel, and he will be discussing some case studies, right? So, Hardik, please continue. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Uh, I will try to do justice in this next 45-50 minutes and try to cover certain aspects of Excel. There are very few things we can cover during this session, and any query, any specific things which may please be asked maybe at the end of the session or sometimes on the chat box also. And this is like Dabur Chyawanprash is aap mein Dabur ka shahad hu. So it's a small session, and we will try to utilize this time for understanding certain things. As such, which I think I should cover during this session, there are basic functions which are extensively used in Excel. That couple of them we will cover, and we will see the session from the HR perspective. Like, so there are two major areas of HR.
where the data assimilation and churning of data and then getting certain information out of these data are more. One is your routine daily time and attendance. We call it a payroll uh, area. And the second is the area where you have your training information assimilated. And from there you generate certain information. So we will try to use this session to understand certain functions which will help you get the basic information. Basic information. And I have a request if you all can mute yourself so that others do not get disturbed. If at all you have any query, you can unmute and ask while in the session at the end of the session. And so now when we talk about case of an HR, as I said, now I assume that you all have some basic understanding about Excel. So we will not get into what Excel is and why it is used and how it is used. I understand that you all know a bit about it. Only question I have to begin with is, are we comfortable with 100% English, or do you want me to change the language to Gujarati or Hindi? Please mute everybody. There's a lot of disturbance coming. So is it from my side or is it in between? I am able to. Not from your side, sir. Thank you. Okay, so we need English as a language. Okay, Hindi, English. ठीक है. एज्यूम कर लेते हैं कि हमको थोड़ा बहुत एक्सेल बेसिक्स पता है. कुछ लोग होंगे जो शायद एक्सपर्ट भी होंगे इस फोरम में. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा सा जानता हूँ. तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं जानता हूँ मैं शेयर करूँ और वो आपको यूजफुल हो. एज्यूम कर लेते हैं कि एक बंदा है, से राघव इज एन फ्रेशर इन एचआर, एमबीए ऐसा कुछ पढ़ के आया है, साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है और एचआर में ही हैज गॉट एन प्लेसमेंट. नाउ सिंस ही इज न्यू, he may have a lot of theoretical concepts of HR and lot of things he need to learn. So since he is a fresh person in the department, so generally the work assigned is documentation part. तो उसको एक काम दे दिए कि भाई तुम्हारा काम है अटेंडेंस मॉनिटरिंग, देन तुम्हारा काम है उससे डेटा बना के रखना, सैलरी स्लिप जनरेट करना, सर वीडियो का ट्रेनिंग होगा उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और एंड ऑफ द मंथ उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दो. नाउ दिस इज वन सिनेरियो where an HR intern or HR fresh candidate is managing the data. Now, how Excel will be helpful? What are functions and tools he would be able to use to get his job done? Queries हो सकता है और उसमें से वो how he can generate the information out of those data which we have. Now, generally उसको क्या करना पड़ेगा? उसके पास में 3 तरह का डेटा मैनेज करना पड़ेगा. पहला डेटा है मास्टर डेटा, which is nothing but the employee master. We all know that is the first data which does not change often. You know, it will change only when the person joins or when the person leaves. तो मास्टर डेटा है जिसमें उसका कोड है, उसका नाम है, कौन से डिपार्टमेंट में है. और हम यहाँ एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, सपोज ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो वर्कर कैटेगरीज में है. ठीक है, तो उनका वेज कितना है, उनका डेली वेज कितना है, मतलब बेसिक कितना है, अदर वेजेस कितना है, कुछ और अर्निंग्स है क्या उनका. तो इस तरह का एक मास्टर डेटा उसको मेंटेन करना पड़ेगा राघव को.
From this master data, उसको दूसरा data जो maintain करना पड़ेगा, as far as time office is concerned, उसको daily attendance data manage करना पड़ेगा, which is a transaction data. Then कुछ और routine activities है, जैसे मैं scenario में बात कर रहा हूँ, suppose training का बात करते हैं, तो he would be also handling the training details. साल में किस महीने में कौन सा टॉपिक पे कितना घंटा ट्रेनिंग हुआ, और उसके ऊपर से he will have to have certain reports. So when we say the master data and attendance data, the report will be payslip. He will have to generate a salary slip individually. Second thing is from training, he has to generate training details. कितना man hours का training हो गया, कितना topic पे attend किया, वगैरह वगैरह. So some basic things in this. I'll share the screen first, and I'm sharing this one master, and from this we will begin. The function that we will cover and try to learn is a conditional if statement, a very widely used lookup, VLOOKUP, HLOOKUP. Then how I can generate certain informations using other if functions like to add and count based on the condition, pivot to generate the MIS, and if time permits, any other topic which is of your interest. So let's begin with this employee master, and I have this table. I'm sure you all are able to view this. Anyone has anything to say in this, please? If it is visible, we will proceed. Yes, sir. Okay. Okay. Screen I have shared, and I think everyone is able to view. Okay. Fine. So here we see this is a small master data. The basic information about this is there is an employee code, there is an employee name, the gender male or female. There are three earning components. I say basic, I say DA, daily allowance, which is a rate, any other additional income, the total for the day, and the department is production. Store, loading, unloading, dispatch, packing, and all this. So various departments, various employees of different gender with different wage rates. This is the master. Another sheet is a transaction, which I say for employee code, a last 30 days attendance data with absent present mark. With these two informations, say I have to generate a sample payslip with some of the basic information which this will have. Okay, and then some of the summary which this particular payslip wants, or this transaction data wants us to generate. Like some summary, how many workers, male, female, what is the wage paid, etc. So I'm sure this is something which we do very often, which Raghav has to do now, and or something like this on a daily basis. Now, to begin with, the very first scenario is to meet the compliance or to be above the compliance. Management has decided that none of these workers, none of these employees should get the daily wage less than 400 rupees. None of this worker should have the daily wage
लेस देन 400 रुपीज, मतलब हर वर्कर का रोज का जो अर्निंग है 8 घंटे का, वो 400 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने उसका बेसिक और डीए फिक्स कर दिया तो भाई ये बेसिक है, ये डीए है। सपोज मिनिमम वेज आपका क्राइटेरिया है, उस मिनिमम वेज में आपने दो कंपोनेंट कर दिया, एक बेसिक एक डीए, और सम पोर्शन ऑफ द मिनिमम वेज गोज टू बेसिक, सम पोर्शन गोज टू डीए, बट ये दोनों मिला के भी टोटल 400 रुपए नहीं होता है। और मैनेजमेंट का डायरेक्टिव है कि भाई आपको उसको 400 रुपए से कम पैसा देना नहीं है। हाउ विल यू डिराइव at a value, or how will you derive that additional amount? तो जब कभी भी हमको कुछ रिजल्ट चाहिए तो किसी कंडीशन पे बेस्ड है। हमको कुछ रिजल्ट चाहिए जो कंडीशनल रिजल्ट, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस। अमाउंट is equal to rate into quantity, no. So I want to provide a wage, daily wage per day rupees 400. If the worker does not have the wage of 400 rupees, whatever is the differential amount that would be added, and his daily wage should be 400 rupees a day. So whenever there are conditions, जब भी इस तरह की समस्याएं हैं या जब भी इस तरह की परिस्थिति है जब मुझे किसी कंडीशन के हिसाब से काम करना है, I can use the if feature of Excel. If is a conditional way of getting our results. अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ठीक है ना। तो जब भी अगर मगर आएगा, उस अगर मगर के सामने एक्सेल में आप जो टूल यूज कर सकते हैं वो है इफ। अगर रेगुलर वर्कर है तो क्या होगा, अगर टेम्पररी है तो ये होगा, अगर स्टाफ है तो ये होगा। हम तो कई बार जो अगर मगर है, इस अगर मगर के लिए हम यूज कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ का कंस्ट्रक्ट सिंपल है, from insert function I can use this if, at least 3 things that you provide whenever you want to use an if statement. आपको कम से कम 3 इंफॉर्मेशन देना पड़ता है हम जब भी if का यूज करते हैं। एक है फंक्शन, फंक्शन का मतलब एक ऐसा रेडीमेड फॉर्मूला जिसमें आप प्रीसेट देंगे, आप इंफॉर्मेशन देंगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यूज करेंगे इफ। इफ के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। पहला है लॉजिकल टेस्ट, मतलब कंडीशन। दूसरा रिजल्ट, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या आपको चाहिए, और अगर ये कंडीशन गलत होता है तो आपको क्या चाहिए। अगर बेसिक और डीए मिला के 400 रुपए होता है तो मुझे अदर इनकम में 0 चाहिए। लेकिन अगर बेसिक और डीए मिला के 400 रुपए नहीं होता है तो मुझे अदर इनकम में वो वैल्यू चाहिए जिससे इन तीनों का एडिशन 400 होगा। तो जब भी ये अगर मगर होगा, उस अगर मगर के केस में हमको यूज करना पड़ेगा इफ। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू डू दिस। माय कंडीशन इज that my minimum earning per day is not less than 400। यहां हम देखते हैं पहला केस लीलावती का, तो उसका टोटल अर्निंग 300 रुपए, मतलब यहाँ डिफरेंस है 100 रुपीज का, क्योंकि हम कैलकुलेशन देख रहे हैं।
और ऐसा ही बाकी के जो आपके लोग हैं 943, उनके केस में भी आपको इस तरह से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करें? इफ अगर दिस प्लस दिस, अगर बेसिक और डीए का टोटल 400 से कम है, अगर बेसिक और डीए का टोटल 400 से कम है, ये क्या हो गया? ये मेरा कंडीशन हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेकिंग दैट एडिशन ऑफ E5 एंड F5 इज लेस देन 400। अब इस केस में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इस केस में दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो E5 और S5 का टोटल 400 से कम होगा, या E5 और S5 का टोटल 400 से ज्यादा होगा। अगर ये टोटल 400 है तो भी ये टोटल 400 से कम है, बिकॉज लेस देन इज नॉट इक्वल टू। तो इफ E5 एंड F5 का टोटल 400 से कम है तो क्या करेंगे? If E5 and F5 total is less than 400, what I want? I want differential amount. कितना? 400 minus E5 plus F5. All right? तो अगर E5 और S5 का टोटल 400 से कम है तो ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को 400 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डिफरेंशियल अमाउंट मिलेगा। अगर ये कंडीशन गलत है, गलत का मतलब E5 और F5 का वैल्यू 400 से ज्यादा है, 400 से कम नहीं है, 400 से कम नहीं है, मतलब 400 है या उससे ऊपर है, उस केस में हमें अदर इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो माय लॉजिकल टेस्ट E5 plus F5 is less than 400, अगर सही, अगर E5 और F5 का टोटल 400 से कम है तो E5 और F5 का टोटल को 400 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा डिफरेंशियल वैल्यू होगा और मेरा टोटल 400 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं basic was 100, DA was 200, so difference was 100, the difference came here and total is now 400. If I drag and drop, we'll see in certain cases the value will be different. तो जहां जहां डिफरेंस था, पहले केस में 100 का डिफरेंस था, 400 हो गया, दूसरे केस में 25 का डिफरेंस था, 400 हो गया। तो जहां जहां जो भी डिफरेंस था, that difference has been calculated and I have got the value 400. Now this is the daily wage. Yes, Yogesh ji. सर इफ 400 से ज्यादा हो तो टोटल, हाँ जी, अगर टोटल 400 से ज्यादा हो तो ओके, ये पहला केस देखते हैं, इसमें बेसिक 300 कर देते हैं। ठीक है ना? ओके सर, नो प्रॉब्लम। 300 कर दिया तो बेसिक और डीए मिला के 500 रुपये हो गया, मतलब ये ऑलरेडी 400 से ऊपर है, इसलिए हमको उसको कोई भी एडिशनल इनकम देने का जरूरत नहीं है। थैंक यू योगेश जी, इससे हमारा टेस्टिंग भी हो गया कि मेरा ये फंक्शन या फॉर्मूला ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी जी सर, मुझे भी यही देखना था, जी, मुझे भी यही चेक करना था, क्या ये हाँ, मेरे भी ये तो यूज होता है। ओके ओके, सो फॉर एनी वैल्यू, अगर ये 400 है, अगर ये दोनों मिला के 400 होता है तो भी 400 से कम नहीं है, है ना? That means I have to put up an equal to sign to make it more sure. हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है। So 100 plus 200, then there is a difference.
बीच बीच में सेव करते रहेंगे क्योंकि सिस्टम का ठिकाना नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज इफ। ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल, बट यस इट कैन बी अ यूजफुल वन। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अगर करना है तो हम कर सकते हैं। सपोज हमको ये इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं ना, खाली उनका ही ये कंडीशन सेट होना चाहिए। ओनली फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 400 से कम नहीं होना। हमको लगता है कि हमको बहुत हाई प्रोडक्शन चाहिए, तो बाकी लोगों को तो चलेगा जो मिल रहा है वो, लेकिन जो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं खाली उनको ही ये एडिशनल मिलना चाहिए 400 के 400 या उसके ज्यादा। ठीक है ना? मतलब अभी यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन हो गया, और ऐसे केस में हम मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। मतलब आई हैव टू कंडीशंस, पहला मुझे डिपार्टमेंट चेक करना पड़ेगा और दूसरा मुझे इनकम चेक करना पड़ेगा। तो हाउ आई कैन राइट एन इफ विद इन इफ। कंस्ट्रक्ट सेम है, हर इफ में कम से कम 3 चीजें जरूरी है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर I5 equals to प्रोडक्शन, अगर ये प्रोडक्शन है तो ही मुझे 400 के ऊपर जाना है, बराबर। कब? जब उसका बेसिक और डीए का टोटल 400 से कम है, तो 400 माइनस दिस प्लस दिस, अदरवाइज। तो अगर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है और बेसिक और डीए का टोटल 400 से कम है तो करेक्शन करना है। अगर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं है तो कोई एडिशनल वेज नहीं देना है। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है लेकिन बेसिक और डीए दोनों मिला के 400 या उससे ज्यादा है तो भी हमको कोई करेक्शन नहीं करना है। तो इस केस में आप देखोगे, पहला केस है प्रोडक्शन का, इसलिए 100 रुपया मिला। सेकंड केस सर आवाज नहीं आ रही। Not audible, sir. स्टोर का वैल्यू 400 से कम है, लेकिन I'm sorry, there was a disconnect. स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। Yes, sir. ओके, सो दिस इज अबाउट इफ। ठीक है, इसको आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहे, एलिब्रेट करना चाहे कर सकते हैं। कोई सवाल होगा तो हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मास्टर वेयर आई एम यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट एंड आई एम डूइंग समथिंग। ठीक है, इसको जेंडर बेस करना कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो 400 देना है, मेल है तो 300 देना है। दो इट इज नॉट एन एचआर प्रैक्टिस, सेम पे फॉर सेम वर्क, दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस। So it is purely based on other conditions, not based on the now इन्हीं लोगों का अपने पास में पूरे महीने का अटेंडेंस सिस्टम, इन्हीं लोगों का अपने पास में पूरे महीने का अटेंडेंस सिस्टम, 30 दिन में इन लोगों का क्या क्या कहानी। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 8 तारीख, 15 तारीख, 22, 29, ये 4 दिन ऐसे हैं जब वीकली अफसर बाकी दिन का एब्सेंट प्रेजेंट का स्टेटस है। Now I have master
जहां मेरे पास उसका रेट है, आई हैव अटेंडेंस जहां पे मेरे पास उसका डेली एब्सेंट प्रेजेंट है। इन दो इंफॉर्मेशन को मिला के मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करना है, जिसको मैं सपोज बोलता हूँ उसका सैलरी स्लिप। इट्स अ सिंपल, very simple format, but we will be using couple of functions to generate this. Okay, this is an individual thing. I need a employee code. उस employee code के हिसाब से उस employee का नाम, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, अगर उसका कुछ पेड लीव है तो पेड लीव, और इन नंबर्स के हिसाब से मुझे उसका ग्रॉस पे कितना बनता है, उसका ग्रॉस डिडक्शन कितना बनता है, और उसको टोटल कितना पैसा उस महीने का मिलता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को क्रिएट करना है। देन यू कैन गार्निश दिस एंड यू कैन मेक इट हाउ ब्यूटीफुल इट कैन लुक लाइक। सो फॉर्मेटिंग वी विल बी नॉट कवरिंग इन दिस। ओके, सो क्विकली एम्प्लॉय कोड, इफ आई एंटर द एम्प्लॉय कोड, उस एम्प्लॉय कोड का मुझे डेट, नाम, डिपार्टमेंट एंड बाकी डिटेल्स मिलेंगे। This means in a report, I am generating data from two different worksheets. मुझे दो अलग-अलग जगह से डेटा इकट्ठा करना है, एक मास्टर से, दूसरा उसकी डेली अटेंडेंस से, और ये दोनों को इकट्ठा करके मुझे उसका एक सैलरी स्लिप जनरेट करना है। ठीक है, तो whenever I have to extract data, जब भी मुझे डेटा कहीं दो जगह से उठाना है, the function that I can use and very extensively used in Excel is lookup. There are two functions, VLOOKUP and HLOOKUP. There is no difference as such in both of them. अगर आपको एक फंक्शन समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम VLOOKUP कर लेते तो क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ एक एम्प्लॉय कोड डालना है, और उस एम्प्लॉय कोड के हिसाब से उसका नाम, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन आना चाहिए। तो कुछ इंफॉर्मेशन मास्टर से आएगा, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से आएगा। मास्टर से क्या आएगा, उसका नाम और डिपार्टमेंट और रेट आएंगे। ट्रांजैक्शन से क्या आएगा, उसका अटेंडेंस डेट आएगा, और उसके हिसाब से उसका अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस डू दिस। हम VLOOKUP कहाँ यूज करते हैं? VLOOKUP हम उस सेल में यूज करेंगे जहां हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। हमको इंफॉर्मेशन कहाँ चाहिए? हमको इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय नेम में चाहिए। किसके बेसिस पे? एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे। ओके, तो जहां हमको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां हमें VLOOKUP यूज करना है। इक्वल्स टू VLOOKUP। आई प्रेफर टाइपिंग या एंटरिंग द फंक्शंस। आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको लुकअप एंड रेफरेंस में मिलेगा। आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं, जहां वो हर चीज का मतलब बताया जाता है। I mean, you know, the system tells what it means. This is how also you can use, and once you have enough practice, you may do it directly. So I will use the method of inserting a function directly. Now in VLOOKUP, there are basically 4 things which I have to tell. VLOOKUP जब भी आप यूज करते हैं, आपको 4 इंफॉर्मेशन सिस्टम को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, इज द लुकअप वैल्यू। हमारे केस में लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय कोड। सेकंड इज टेबल एरे। टेबल एरे मतलब वो टेबल, वो डेटा सेट जिसमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगा जो मैं ढूंढ रहा हूं। मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं एम्प्लॉय नाम ढूंढ रहा हूं। एम्प्लॉय नेम जिस टेबल में है, वो टेबल मेरा टेबल एरे होगा। दैट इज द सेकंड आर्गुमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय कोड टू एम्प्लॉय नेम। I'll select the entire range. As such, for this answer, I need only 2 columns. Comma. अच्छा, इसको मैं for a while fix कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस रेंज को आगे भी यूज करूँ। तो I'll make it fixed by a dollar sign. Comma. Column index. Column index मतलब वो कॉलम का नंबर जिस कॉलम में
वो इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। मतलब मुझे एक एम्प्लॉय कोड का नाम चाहिए जो मास्टर शीट के B5 से I947 के बीच में एक्सिस्ट करता है, और इस B5 से I974 के बीच में वो कौन सा कॉलम है जिसमें एम्प्लॉय नेम एग्जिस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से इट इज कॉलम नंबर 2। फर्स्ट कॉलम इज एम्प्लॉय कोड एंड सेकंड कॉलम इज एम्प्लॉय नेम, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स इज नंबर 2, सेकंड कॉलम। और एक चीज जो आप हमेशा याद रखेंगे वो ये है कि ये जो टेबल है, इस टेबल का पहला कॉलम वो कॉलम होगा जिसमें आपका लुकअप वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मतलब this table will start from employee code and not from serial number. This table will start from employee code and not from serial number. So this will start from employee code and not from serial number. Therefore, my table array is B and not column A. Okay. अभी यहाँ हमको दिखाता है NA मतलब not available because my lookup value is blank. I am getting NA. Let me check for this particular employee code. I'll put up the employee code, paste it. I got the employee name as Leelavati based on employee code. So if I change this employee code to some other employee code, the name will change accordingly. So if it is 4418, it is Ram Murat. Similar way, department, I will use the same thing. I will not retype it. I'll just say VLOOKUP. My lookup value remains same because it is always employee code. What will change is the column index. आपका range same है B से I, so B, C, D, E, F, G, H, I. I think it is 8th column, the last one, which contains department information. So therefore, it is department name. The only thing I have changed is the column index. The range remains same. Now, present days. So present days is how many days is present. Okay. That I get from the absenteeism information sheet, here time and attendance sheet. So here I have all the data. I'll use total present, total absent, and say paid leaves. So along with VLOOKUP, I am also understanding another function. In this, I need total present, I need total absent, and I need paid leaves. मुझे क्या चाहिए? मुझे total कितने दिन हाजिर था, कितना absent था, और कितना दिन को उसको ऐसी छुट्टी मिला जिसका उसको पैसा मिला है, ठीक है? एंड वीकली ऑफ मुझे पेड नहीं है। तो व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट डेज? क्या करना है? मुझे इसमें से टोटल पी कितने हैं ये गिनने हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय हाउ मेनी डेज प्रेजेंट? ओके, so whenever I have to count something, the function I use is either count or I use count A. This is a simple function when I have to use count. Count will count numbers and count A will count alphanumeric values. तो जहाँ टेक्स्ट वैल्यूज है, एम्प्लॉय कोड है, ये P, A, P वगैरह कितना है, मैं वहाँ नॉर्मली यूज करूंगा काउंट A, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या करना है? यहाँ मुझे गिनना है स्पेसिफिक। Here I have to count specific. मतलब मुझे गिनना है कितने प्रेजेंट हैं। तो टोटल काउंट नहीं चाहिए, बट मुझे काउंट चाहिए P का। और ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल काउंट या काउंट A, I will use count ifs. Okay, if and ifs, I will not touch upon if. If is single condition, ifs is multiple conditions. So I will teach you the multiple conditions only. This you can use for single condition or for various conditions. So what I need to do? I need to count total present.
So for count if, there are two criteria. First is criteria range. हमको किसमें गिनना है? हमको इसमें गिनना है. Between C5 and AF5. So I have to count in between this. क्या गिनना है? What is my criteria? My criteria is wherever there is P, count. So it is counting total number of present. कितने दिन वो बंदा हाजिर था? Count if between C5 and AF5, what? P. So count all those cells that contains P. For absent, can I drag and drop? Yes, I can do that because I have made my range fixed. I will do this for all of them, and instead of paste, I will use a shortcut Control R. Control R is a shortcut to fill right. I'll simply change my criteria from P to A and P to I am using PL as paid leave. So what I'm doing is Sir, I have sir, changed the control- criteria. सर कंट्रोल आर क्यों दबाया? Control R is fill right. हम जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जी सर. कॉपी पेस्ट का एक दूसरा अल्टरनेट है कंट्रोल आर. मतलब अगर मैंने यहाँ कुछ लिखा है और यही वैल्यू मुझे आजू बाजू में चाहिए दाहिनी तरफ, आई कैन यूज कंट्रोल आर. और अगर यही मुझे नीचे चाहिए, आई कैन यूज कंट्रोल डी. सो कंट्रोल प्लस डी इज fill down as good as copy paste, and control plus R is Fill right. fill right Okay. No problem. as good as copy and paste towards right. Okay, this you can use for all functions and formulas and anywhere wherever you want to have a continuous copy and paste operations. So what I did, my range remains same, only thing is my value changes. So now I have got my paid leaves, present, absent, वगैरह वगैरह मुझे यहाँ से मिल गया. And fortunately, unfortunately, okay, I'm sorry. कंट्रोल एस करने पर होगा सर. I have to, what I have to, sorry. मुझे खाली कॉलम फिक्स करने चाहिए थे, रो नहीं. And therefore, there is the same value in every case. This is an error, rectified. And again do Control D in this case. So each of them will have a different value. So now I have master, which I got from master sheet. I have some transaction value that I'll get from attendance sheet. I will use again the method is VLOOKUP. What I have to look up? I have to look up the employee code, where in the transaction sheet, what I need is total present, column number 32, 33 and 34 I will be using, comma 32, comma 0. I'll fix up this range. My VLOOKUP value is employee code. I got total 22 days present. Same function for absent days, though it is not required to calculate the wage, but yes, I will need this. So it says absent days 44180. Let us check 4418. Okay, absent days is 0. My result is correct. I need paid leaves. I will do the same thing. Only change will be the column index, and it will be 34, so that I will get the paid leaves. So this is about the information that I wanted. What I wanted from transaction and master. I need employee details, I got it. I need transaction details, I got it. Now I need the rates. Again, I will be using the same lookup, VLOOKUP
for this employee. From where? From master. What I want basic, and other wages I don't need department. I just give this. Total is again calculations. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Comma 4, comma 0. This will give me the basic. I fix this C5 because so this is 5. Why did that come 4418? Let us check 4418. Okay, since he is in maintenance, other incomes are 0. Okay, fair enough. So this is what it is. Now amount is what? Amount is simple. Rate multiplied by what? Total present days plus total paid leaves. So put together, this is what it is. So now this again I'll make it fixed so that I can get it the answer right. So for 22 and 325 days at this rate, his gross pay is this. PF for example is a deduction of 12% on basic and BA. Simple, I'll say 12%. This is one way of getting it, but this will do for one day. Instead, if I say the rate is 12%, the amount will be what? Amount will be this plus this, 12%. So this is the provident fund, which is a deduction. So his net pay is rupees 8250. All right. This is how we can generate a simple report based on these informations. All right. So what we learned so far is if, what we learned so far is VLOOKUP, and what we learned so far is a function called COUNTIF. Now, what is the total wage and deduction? Total wage and deduction. Again, I have the rate. I have total wage. I can calculate this. How? Now I have the attendance. So total is this, which is the total multiplied by present plus paid leaves. Okay, so this is multiplied by this total. I can have a condition कि अगर ये match होता है तो ही गिनना है, but I'm just taking this simple. Now, I need a summary from this. सर ये ओनली वन क्लिक से पूरे सब में कैसे अप्लाई हो जाता है? सर आप उसको अगर डबल क्लिक करेंगे ना, ओके सर, अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे और उसके पहले वाला कॉलम है, उसके बाद वाले कॉलम में वैल्यूज हैं, तो उतने में वो ऑटो फिल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। Okay, so now assume that 13.1% is the PF liability, which is for the employer. Now what I need is, I need a summary from this entire data set. What I want department wise total wage.
डिपार्टमेंट वाइज टोटल वेज। दो तरीके हैं, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। वन मेथड इज यूजिंग सम इफ, सेकंड इज यूजिंग पाइवट टेबल। So quickly, as we are nearing to the end of the session, I think the time is a constraint. So we'll just quickly see the lookup. Sorry, pivot table. It is available in insert menu. Insert pivot. Pivot का इस्तेमाल हम करते हैं जनरली MIS बनाने के लिए। मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उस बहुत सारे डेटा में से मुझे कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे चाहिए। आपका साहब आपको बोलते हैं कि भाई मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट वाइज कितना पीएफ लाइबिलिटी वो चाहिए, मुझे कितना मेल कितना फीमेल है वो चाहिए, मुझे एवरेज वेज कितना है वो चाहिए। You have the same transaction data, you have same master data. From these same master information, you need various information, various reports. So how to do this? I will use a pivot, insert pivot table, select automatically आपका range select हो जाएगा। नहीं होता है आप उसको select कर भी सकते हैं। कहाँ चाहिए? I need this on a new worksheet. Okay, I'll select a new worksheet and सर आपकी आवाज ही आ रही है, कंप्यूटर से कुछ नहीं हो रहा है। जी आपकी आवाज ही आ रही है, कंप्यूटर से कुछ नहीं हो रहा है। स्क्रीन तो शेयर है और आपकी मुझे आवाज सुनाई दी, तो आपको भी सुनाई दे रही है? सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन से कुछ नहीं आप दिख रहा है। स्क्रीन से आप क्या कर रहे हैं? स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। It's your problem. Other people are. I am getting the screen. The concerned person. I am also getting. Yes, I'm also. Concerned person have problem. I am also getting. Okay, yeah, Hardik, continue. सर स्क्रीन दिख रही है so, सर स्क्रीन दिख रही है, लेकिन जो आप कर रहे हो ऑप्शन पे इंसर्ट पे जाकर पिवट टेबल पे ओके, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। आपने किया है? ओके बट हम वही कर रहे हैं जो अभी आपने कहा, ऑप्शन इंसर्ट पाइवट टेबल है ना। सो इंसर्ट मेनू, हाउ टू डू दिस एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। ये मास्टर है, इसके ऊपर से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई गो इंसर्ट में टेबल्स में ऑप्शन है पाइवट टेबल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको बोलेगा कि आपको किस डेटा रेंज में से पाइवट क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट अगर मेरा कर्सर उस टेबल में कहीं भी है तो पूरा टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं है हम यहाँ से सिलेक्ट कर भी सकते हैं। सो जिस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये पाइवट टेबल जो भी रिपोर्ट जनरेट करेगा ये कहाँ चाहिए? आई नीड दिस ऑन द न्यू वर्कशीट। आई विल सेलेक्ट न्यू वर्कशीट। अब जब ओके करेंगे तो हमको इस तरह का एक शीट मिलेगा। इन डिफरेंट वर्जन ऑफ एक्सेल दिस लेआउट में चेंज स्लाइटली, बट बाय डिफॉल्ट ये चार इंफॉर्मेशन आपको सब जगह मिलेंगे। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? माय रिक्वायरमेंट इज डिपार्टमेंट वाइज टोटल वेज। डिपार्टमेंट वाइज टोटल वेज, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं और उनको हमने कितना पगार दिया या देना है या देना पड़ेगा। तो मुझे दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? पहला इंफॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट, तो मैं सेलेक्ट करता हूं डिपार्टमेंट। तो ये क्या होगा? ये रो वाइज डिपार्टमेंट चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट को रो लेबल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये अलग तरह से चाहिए, कॉलम आना चाहिए, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से उठा के कॉलम में कर देंगे तो डिपार्टमेंट कॉलम वाइज हो जाएगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन ऑलवेज डू। आई एम कीपिंग इट दिस वे। ओके, अभी क्या चाहिए? अभी हमको चाहिए टोटल वेज। तो यहाँ आपको आप जब सेलेक्ट करेंगे टोटल, लेट मी चेंज आई थिंक टोटल वेज, मैंने यहाँ चेंज किया, यहाँ मुझे चेंज करना है। तो आप जब भी मास्टर में कुछ चेंज करते हैं, ये गो टू ऑप्शन, रिफ्रेश, आपने डेटा सोर्स में चेंज किया तो गो एंड चेंज डेटा सोर्स। Now it is there. Instead of total लिखा था ना, टोटल वेज आ गया एंड टोटल प्रोविडेंट फंड आ गया। तो आपको यहाँ पे दोनों इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल क्लिक मालूम हो जाएगा। आप उसको फॉर्मेटिंग वगैरह करके एंड यू कैन यूज दिस एफिशिएंटली। सो दिस बिकम्स अ रिपोर्ट नाउ। ठीक है, अभी आपने ये रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया। आपका साथ बोलते हैं कितने लोग हैं,
how many people are paying, dispatch में कितना, electrical में कितना, loading में कितना, maintenance में कितना. What I need employee count. I need employee count. कहाँ से आएगा? Employee code से आएगा. मुझे उसका डिटेल नहीं चाहिए. What I need is count. So when I need the count, I won't put in either row or column. Rather, I will put in value section. And आपका जो भी सिलेक्शन है उसके हिसाब से सिस्टम ऑटोमेटिकली फंक्शन एडजस्ट कर देता है. जैसे एम्प्लॉय कोड आपने दिया तो सिस्टम ने काउंट फंक्शन ऑटोमेटिकली यूज कर दिया. आपने टोटल बोला, आपने वेज यूज किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एडिशन यूज किया. आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं. वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, व्हाट आई नीड, इफ आई वांट टोटल, टोटल मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि कोड है. कोड इज एन अल्फान्यूमेरिक वैल्यू. इसलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंट चाहिए. So I will count this. So total 943 employees paid a wage of 59 lakhs and a PF liability 7,77,000. It is employer's liability. So this way I am using a pivot. इस pivot में हमको ठीक से इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ कुछ फंक्शंस और कुछ formulas. So what I have covered is if, what I have covered is VLOOKUP, what I have covered is pivot table, what I have covered is count ifs. Now in the same sheet इसी तरह का रिजल्ट अगर मुझे बिना पाइवट के चाहिए, if I need total wage department wise and I don't want to use pivot table. Pivot is generally for reporting and sharing purpose, but in the same sheet if I want certain informations, तो जैसे गिनने के लिए हम count if यूज कर रहे थे, एडिशन के लिए हम यूज करते हैं sum ifs. I will use sum ifs. सम इफ और सम इफ्स दो फंक्शन है, बट सम इफ आप अभी इग्नोर करो. आप यूज करेंगे सम इफ्स. एडिशन करो जब, कब, जब ये पर्टिकुलर कंडीशन मीट होती है. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है वेज किसका, डिस्पैच डिपार्टमेंट का या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वगैरह. तो माय मेथड इज सम इफ्स. द फर्स्ट थिंग इट नीड्स इज सम रेंज. सम रेंज वो कॉलम जिसका हमको एडिशन चाहिए. इस केस में मेरा एडिशन कॉलम J. दिस इज माय सम रेंज. ओके. सेकंड इज क्राइटेरिया रेंज. क्राइटेरिया रेंज मतलब वो कॉलम जिसमें वो शब्द है जिसके ऊपर से मुझे एडिशन करना है. मतलब मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल चाहिए, तो मेरा क्राइटेरिया वो कॉलम होगा जिसमें डिपार्टमेंट लिखे हैं. इस केस में I. एंड क्राइटेरिया मतलब वो शब्द जिसके ऊपर से हमको एडिशन करना है. इस केस में माय क्राइटेरिया इज डिस्पैच, या वो शब्द जो उस पर्टिकुलर सेट में लिखा है. सो एड द वैल्यूज इन कॉलम J, दैट इज सम रेंज, व्हेन इन कॉलम I, दैट इज क्राइटेरिया रेंज 1, you get the word dispatch which is written in cell B20 and give me the result. So if you see in pivot I have 472995, sorry 2395. In dispatch also I have 472395. So this way I can use some ifs and I'll get the same value what I got in the pivot table. So pivot you can always share, and this method you can always use in your Excel files where you yourself want to get the information in the same sheet. You don't want to send it across, you can use sum if and count if, sum ifs and count ifs. And if you want to share these informations in this way, you can use pivot table. So these are some basic understanding about some of the commonly used Excel functions. I'm sure many of you would be already using it, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए शायद ये नया होगा, पहली बार होगा.
और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया है वो आप तक पहुंचा है, आपने इसको you might have understood, learned. It's a quick succession, मतलब this is an hands-on. So if at all there is any query, any questions, you can always have you can always Sure. have I have a question. To make it easy, we Yeah. can create drop down list at the employee code, no? Of course we can create the drop down list. If I don't Okay, enter again and again numbers, right. how can I create drop down list? Okay, so how can we create this drop down list, right? Yes. That is what we want to know. At the employee code. Okay. So सवाल बहुत सही है। ये T04418 जो मैंने लिखा है, ये T04418 में हर बार टाइप करूँ, दूसरी चीज जाकर सेलेक्ट करूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा है अगर मुझे कोई एक लिस्ट मिल जाता है तो उस लिस्ट में से मैं सेलेक्ट करूँगा, अकॉर्डिंगली मेरा वैल्यू चेंज होना चाहिए। फैंटास्टिक। नाउ टू गेट दिस list, the method is in data menu there is a option called data validation. From here we can generate a list. In data menu there is an option called data validation. From this data validation, I can generate a list. Okay, now how to do this? Let me just have a quick glance on. I have my employee code from B2 to say B943. Okay. What I'll do is I'll go to data validation, and in settings part of this, there is an option called allow. By default, it allows any value. Instead, I will choose the option list. ठीक है, क्या करेंगे? लिस्ट करके एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमको डेटा के वैलिडेशन, डेटा मेनू या डेटा कमांड के रिव्यू में डेटा वैलिडेशन, और उसके सेटिंग्स में अलाउ लिस्ट। देन इट आस्क्स सोर्स, कहाँ से लाएंगे? तो मास्टर से लाएंगे। कुछ वर्जन है एक्सेल के जो आपको अक्रॉस द शीट सेलेक्ट करने देंगे, जहां नहीं कर सकते, जैसे मैं भी कर रहा हूं। इस केस में इट इज नॉट अलाउइंग मी टू सेलेक्ट द रेंज फ्रॉम अदर शीट। डजंट मैटर, आई विल गेट इट दिस वे। सो मास्टर इज द शीट नेम, B2 से B943, this was the range, and this is how I get the list. Now if I select any of this employee, you will see that the value will change on all of them. Just do a bit so that you can see more clearly. You see here 8650, employee name is Veena. 3569, employee name is Rita. Attendance is very less, so as the salary. Sir, can you please repeat it again, this formula? This method? Yeah, this method. Okay. How we do this? So this is the default cell. हमने default cell था जैसा पहले वैसा कर दिया नॉर्मल। इसमें मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करना है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करना है एम्प्लॉय कोड। तो wherever I want to generate this drop down list, मेरे पास कहीं ना कहीं सोर्स होगा, मैंने कहीं पे वो लिस्ट बना के रखा होगा। Preferably, mandatorily, it should be in the same workbook. आप जो फाइल यूज कर रहे हैं उसी फाइल में वो अरेंज होना चाहिए, so that it is easy for you to access and retrieve and give the reference above. So what I'll do, I'll select employee code वाला cell. I'll go in data command, आपका ऊपर दिखता है home, insert, page layout वगैरह, वहाँ data option है।
उसमें एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन. Again, I'll go to data validation. In setting tab, there is something called allow. By default, it allows any value. उसकी जगह I will use the option list. List will ask you the source. Source हम दो तरह से दे सकते हैं. एक हम टाइप कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी जगह का, किसी रेंज का रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है, अगर टाइप करेंगे तो आप जो टाइप कर रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा वो लिस्ट में दिखाई देगा. और अगर आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं. हमने यहाँ क्लिक करके इफ आई ट्राई टू कलेक्ट दिस, I can click and select the range. In certain Excel versions, it will allow you to click and select across worksheets. In certain, it will not. But it does not mean that I cannot use this. मैं क्या करूँगा? मैं उस sheet को refer करूँगा. कैसे? MASTER is the sheet name. Exclamation mark, which is a connector which connects a sheet with range. Range was B2 to B943, जो मैं पहले देख चुका हूँ. So what I do, my source is master sheet का B2 से B943 range. Okay, as soon as I say okay, I'll get the list. And as I select the options, I'll get my results as well. Got it. Thank you so much, sir. Right. Thanks for question, and go for others also to learn. So this is what I have to share today from my side. Some basic things that we covered. As I said, we covered if, we covered VLOOKUP, we covered count ifs and some ifs, we covered pivot. There is one thing which I have said, that VLOOKUP and HLOOKUP are same. If you know one, you will understand second. The only difference between these two functions is how my table array, मतलब वो टेबल जहां से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो किस तरह से अरेंज किया है, उसके हिसाब से मुझे VLOOKUP या HLOOKUP यूज करना पड़ेगा. मतलब हमने मास्टर का यूज किया अपने VLOOKUP में, हमने यूज किया था मास्टर. ठीक है. जनरली दिस इज द मेथड ऑफ डेटा एंट्री. हम जनरली डेटा एंट्री इसी तरह से करते हैं. मतलब एक लाइन में पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, एम्प्लॉय कोड, उसका नाम, जेंडर वगैरह वगैरह. दिस इज वन लाइन. कभी कभी हो सकता है हम अपना डेटा अलग तरह से स्टोर करते हैं. मतलब हम अपना डेटा कॉलम वाइज बनाते हैं. ठीक है, हम अपना डेटा कॉलम वाइज बनाते हैं. मतलब यहाँ पे ईच कॉलम इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड. आर यू गेटिंग? हियर ईच रो इज अ रिकॉर्ड. ठीक है ना? ये दो तरह से हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. तो जब मेरा डेटा हॉरिजॉन्टली स्टोर है, दैट इज अक्रॉस कॉलम, कॉलम ए से लेके कॉलम जेड या उससे भी आगे तक अगर मेरा डेटा स्टोर है, this is across column. Horizontally, I will use the function VLOOKUP. ठीक है. लेकिन अगर मेरा डेटा इस तरह से स्टोर है, that is across rows, ऊपर से नीचे, the function I will use will be HLOOKUP. Instead of VLOOKUP, it will simply become HLOOKUP. Everything else is same. Let us see this. If I change the range, now my range will become like this, top to bottom, and उधर हमारे पास column index था, यहाँ पे row index है. So this number will remain same 2. I will get this. Okay. It is showing NA because this is a limited thing. Let's say 2792. So 2792 DWP. This is using HLOOKUP. This is using VLOOKUP. So you are getting the name using HLOOKUP and employee department using VLOOKUP. Everything is same. Lookup value, table array, index, and
0. 0 I need because I need the exact match. मैं जो lookup value लिखा है same thing मुझे उधर मिलना चाहिए, इसीलिए this is the 0. So this is the difference between VLOOKUP and Match lookup, and this is all I have today to share with you. I'm sure this will be helpful to you. I've taken a scenario, the other area for now because of the time limitations. I'm not able to touch upon on the training part, but the details, the method remains same, function remains same. You need to count total man hours, that is submit. You need to count total training program, that is counting. Hardik, can you just give a glimpse of this training sheet in few minutes? Okay. Just glimpse. Yeah. So, are you able to see this? Are you able to see this another sheet? Yes. Training wala. Okay. So now here the data is simple. I have a month. So आप रोज का रोज जो भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसको हमने स्टोर करके रखा है. I have taken up these informations. ठीक है. So there is a month, employee code, the name, department. It is again the same master. Training name. So there is a training topic T1, T2, T3, T4. किस दिन हुआ, किस टाइप का ट्रेनिंग था, बिहेवियर था, फंक्शनल था, सेफ्टी था, कितने दिन, कितने घंटे का प्रोग्राम था और उसका मोड क्या था, इंटरनल था, एक्सटर्नल था, किस तरह से था. This is the basic information that you have stored. Now based on this information, based on this data, you need certain information. What information you need? You need for a given employee, what was the total man hours. Chicken. So it's employee code. Again, I will use the same. I'll take the list as someone has asked me to do this and say training details. That is the sheet name. Put up equals to. I think this will be noted because there is space in between and some range. I think it is. Again, B5 I'll take to say B100, limited one. Okay, is it giving me some values? So this is my employee code. Employee name, it's again, I'll use a simple VLOOKUP. What I want to look up, I want to look up this. And what is the range? The range is this, comma 2, comma 0. So employee is frame 1196. I'll just add it and make it 1196. So we can add. Now for frame, what is the total man hours of training? उसने कितना ट्रेनिंग, कितने घंटे का ट्रेनिंग उसका ये साल में हो गया. What I'll do, what I need to do, I need to add what? I need to add man hours, and I need to add man hours for whom? For frame. So I want to add value based on a condition. What I can have some ifs. किसका? Of total hours. कभी जब employee code में ये value. Okay, since it is in time there, here it is in numbers. I'll convert this into time format so that total man hours for frame. Let us change it to someone else. Babulal, Kanchan, maybe Suresh, like this. How many trainings? Again, this is nothing but count ifs. Criteria range is what? Criteria range is employee code. So I want to count how many times he has attended the training, and it is the criteria. Criteria is employee code. So he has only one training. One.
Okay, let us have 2792 country है कितनी बार? So this is T1001 T, just validate. So शिवा 5.5 घंटे का ट्रेनिंग और फिर 2 ट्रेनिंग अटेंड किया है. So from this you can generate certain information. Now you want other things like if I have training and I want total participant for that training. कितने लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड किया? For example, again I can use a data validation list. My source I'll say T1, T2, T3, T4, T5, T6, etc. Let me see. Yes. Okay, so there are training names T1 to T2 and for a given topic, how many participants have attended. So what I can do, I can have count ifs where T2. तो 14 लोग हैं जिन्होंने T2 टॉपिक पे ट्रेनिंग अटेंड किया. कितने घंटे का था वो भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं. Sum ifs what ट्रेनिंग आवर्स किसका जब ये फॉर्मेट पे इंटर. तो T2 टॉपिक पे 14 लोगों ने ट्रेनिंग लिया. टोटल ड्यूरेशन टोटल मैन आवर्स is 4 hours. Any other topic? T1 5 लोग 10 घंटा, T4 17 लोग 5 घंटा, T6 23 लोग लेकिन ड्यूरेशन 6 hours. So this is how you can use Excel and its functionality for a training. You want some pivot to this, insert pivot table. I want monthly man hours. Simple. हर महीने में कितने घंटे का ट्रेनिंग हुआ. Pivot table, insert pivot. Okay. What I need? Month. Yes, I got month. What I need? Total hours. So I got total hours. कैसे करना है? ऐसे करना है. Sorry, this will be the value part and not count, but I need some. It's the format that I need to change because of the time. So on month, this is a total trend. Insert line chart. So this will give me how is my progression. Let's try and see if this can help. So
quick reporting on this, and then you can add anything in this. एक महीना कितना घंटा कितने लोग, what I need is employee count, कितने लोगों ने 192 का use किया. So I'll say count and use it here. Sorry. Okay, count of code. So I got this number. This has to be numbers. So 903 लोगों ने 1900 घंटे का ट्रेनिंग लिया. मुझे इसमें आदमी नहीं चाहिए. I don't need anything else. So I need only one. Name of chart, only this. I don't need count, so I got employee count and total hours. So this way you can use these tools for the basic Excel activities. Some of the things that you are using every now and then. Use this. Two basic functions on your payroll, your time of employment and training. These are some of the things that can be used. It can be used very well. So that's all from my side. Thank you so much for your patience listening. If you have any query, please see this. If you have any questions to ask to Hardik, then feel free to ask. Okay, so I think everyone understood what I said. No question is either you learned everything or you did not understand anything. या तो सब समझ गए हैं या कुछ नहीं समझे हैं. दोनों ही सूरतों में. We have learned a lot, sir. No doubt. Really, training session was really so good, and I think everyone has taken these initiatives because you have given a lot of formulas, lot of method that is really useful in this professional career. Thank you so much. Correct. So pleasure. Thanks, Nitin. Thanks for your feedback. And yes, Yogesh, you will be getting recording of this session, right? So I will be sharing that info in our group itself, right? And what we are planning is that I am also planning an advanced workshop for HR dashboards. So you take the functions of, say, training and development, recruitment, right? And the normal dashboards which we use in Excel, right? We are planning an exhaustive sessions in designing HR analytics dashboards. Right. So that announcement will be made as and when we declare the things. But prima facie, I hope you found the session very informative, and maybe you might be using all these functions, or maybe one or two things you might have learned. Right. So any questions if you have, if you want to share any feedback, then please feel to do that. Nitesh sir. Yes, Kavita. सर ये हम लोग काउंट इफ यूज करते हैं ऑलवेज, बट काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या डिफरेंस है सर? Okay, Kavita, your question is what is the difference between count if and count ifs? Yes sir. हमने खाली count ifs देखा है. हाँ सर, वो ऑलवेज यूज करते हो, काउंट इफ्स में कभी यूज नहीं करते एक्चुअली. करेक्ट. अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है ना? हाँ सर, हाँ सर. ओके, तो जब सिंगुलर से प्लूरल करते हैं हम ऐसे ईएस लगा देते हैं. ओके.
है ना? तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर आपका गिनती किसी एक ही क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है ओके तो आप काउंट इफ यूज कर सकते हैं। ओके लेकिन अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है, मतलब ओके हम जो डेटा देख रहे थे, फॉर एग्जांपल हम ट्रेनिंग का ही बात करते हैं, ठीक है? तो उस ट्रेनिंग में मैंने क्या गिना? मैंने गिना टोटल मैन आवर्स, ठीक है? ओके उस एम्प्लॉय का टोटल मैन आवर्स कितना है। लेकिन अगर वहां ऐसा कोई आपको पूछे कि शिवा ने की वन टॉपिक पे कितने घंटे का ट्रेनिंग लिया, ओके ठीक है? अभी आपके पास क्या हो गया? अभी आपके पास दो कंडीशन हो गए, वन नाम शिवा, दूसरा ट्रेनिंग का टॉपिक T1। ओके तो जब भी ऐसा परिस्थिति आएगा जहां पर आपके पास में एक से ज्यादा चीजों पे गिनना है या जोड़ना है, ओके आप सम इफ्स यूज करेंगे, इट इज प्लूरल, मल्टीपल कंडीशन, ओके है ना? लिखने का मेथड सेम ही है, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया। ओके आप जितना चाहें उतना उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ओके ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं, ऐसे कितने मेल एम्प्लॉय हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं और जिनका वेज 300 से कम है? ओके तीन कंडीशन हो गया। क्या हो गया? जेंडर मेल, एंड वेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, और उसका वेज 300 से कम देना, थ्री कंडीशन था। ओके तो यहाँ काउंट इफ काम नहीं करेगा, ओके आपको काउंट इफ्स यूज करना पड़ेगा, ओके है ना? तो क्राइटेरिया रेंज पहला हो जाएगा जेंडर वाला कॉलम, दूसरा हो जाएगा डिपार्टमेंट वाला कॉलम, ओके क्राइटेरिया रेंज 3 हो जाएगा वेज वाला कॉलम, ओके क्राइटेरिया 1 हो जाएगा उसका जो जेंडर आप ढूंढ रहे हो, आपको मेल चाहिए था, क्राइटेरिया बिकम्स मेल, आपने एम लिखा है या MAL लिखा है, दैट बिकम्स द कीवर्ड। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, तो क्राइटेरिया बिकम्स प्रोडक्शन, PROD लिखा है, PROD CTI लिखा है, व्हाटएवर मैटर। एंड थर्ड इज द कंडीशन, तो वेज या टोटल वाला कॉलम इज ग्रेटर देन और लेस देन समवेयर। तो जब भी मल्टीपल कंडीशंस है, आपको गिनना है या जोड़ना है, आप या तो सम इफ यूज करेंगे, सम इफ्स यूज करेंगे, या काउंट इफ्स यूज करेंगे। बट ये दोनों फंक्शन सिंगल कंडीशन पे भी यूज होते हैं, इससे अपन ने वो सीखा, ओके है ना? तो अभी आज के बाद आप इफ छोड़ के इफ्स ही यूज कर सकते ओके थैंक यू सर हैं। ओके, Yeah, so any more questions? Okay, how many of you would be interested in looking for or going for Excel dashboard trainings? Yeah, I am interested. Okay. sir I am also interested Sir, I am also interested. Okay, so I will do one thing. I will just float a Google form on. Okay, yeah. So I will be floating a Google form, right? So you can fill it in our WhatsApp group, right? And then we can arrange one session where you can learn or to organize dashboards, HR dashboards, right? Right. I will be sharing this links to the recordings of the recordings in our WhatsApp group, right? So that you can use it for in future. And please share your feedback, right? If anybody would like to just say a thank you note to Hardik, then they are welcome.
Okay, everyone. Okay, this is then sometimes thank you, again. Hardik, very much. Thank you very much, and sparing your time for this session, right? I hope everybody must have learned something or other thing. At least कुछ तो पता चल ही गया होगा, right? Yes, Once again, on behalf of the entire group, Hardik, I thank you very much for this Thank great you, sir. session. Thank you. Yes. Okay, okay, everyone, have a nice Sunday and happy Sunday. Enjoy your time. same to you, sir. Thank you. Bye. Okay, Thank you, goodbye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.